And good morning, everyone. Good morning, teachers, principal ma'am, Luna ma'am, and everybody else, the kids I can see, and the guest of honors today, the mothers. Uh, for the mothers, it's just not a special day because you're present here. And I say this to all the mothers that mothers, you're the best version of yourself. You are the best mothers possible for your kids. Because this is, I think, one role, one relationship जिसमें हम कुछ भी आलस नहीं करते, कोई चीटिंग नहीं करते, हम अपना बेस्ट पॉसिबल रोल जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं. बिकॉज व्हेन अ बेबी इज बॉर्न द मदर इज ऑल्सो बॉर्न एट दैट टाइम. दिस इज अ रोल विच यू ऑल्सो लर्न एज अ बेबी ग्रोज, एंड दिस इज अ रोल विच यू perform and do to the best of the abilities. So a round of applause to all of you moms, because be proud, be happy that what you are doing, you are the best. सारी मम्मा अपने आप में बेस्ट ममाज होती हैं. So that is one thing as a pediatrician I always reassure moms. And coming on to a lot of things I have to talk today. छोटा छोटा सा सब करूँगी touch. Moms, you are the superheroes and you have superpowers. एंड आई से दैट बिकॉज सारी मम्मी लोगों को पता होता है कि बच्चों ने कहाँ क्या छुपाया है. वो सारा सूंघ भी लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं. दैट इज़ समथिंग विच वी आर गिफ्टेड, वी आर बॉर्न विद एज सून एज अ बेबी इज बॉर्न. एंड यू आर द यूनिवर्स ऑफ योर चिल्ड्रन. यू नो यू दे सर्कुलेट अराउंड यू. वो आपके आसपास घूमते हैं. मैं अभी भी देख रही थी कि बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे एंड वॉट दे वर फाइंडिंग कि हमारी मम्मा कहाँ हैं. एंड दे वर लाइक बेबी एंड दे वर हैप्पी टू सी देम. You know, तो आप ही उनकी दुनिया हो. So be proud that yes, you are doing a good job and you are the word to them. Also, मतलब if I talk about my own self, मैं अभी भी इतनी बड़ी हो गई, जब भी घर जाती हूँ, I am always after like a duckling after my mom. वो किचन में जाएंगी, मैं किचन में जाऊँगी. वो जहाँ भी जाएंगी, I'll be there after her. So that's what mothers are like, you know, full of love, care, affection, everything. But parenting nowadays is very difficult. This is one thing I want to talk about today to everyone. It's been 21 years I have been practicing pediatrics, and the transition I have seen in parenting with the kids is scary. You know, when I was studying, what we were dealing with was infectious diseases. कि tuberculosis हो गया, कि measles हो गया, कि ये हो गया, वो हो गया. Thanks to vaccination, वो diseases हमें नहीं मिलती. But now we are sitting on another time bomb. Because we have been aping Western countries and culture so much that now we are aping their diseases, their challenges. Now India is like on a time bomb of diseases which have started to happen, and they are going to explode if we do not take care. You talk about allergic diseases, you talk about skin diseases, you talk about asthma, you talk about autism, you talk about ADHDs, you name it, and it is there, and it is rising like steep high. एंड इट्स नॉट दैट कि हम कुछ कर नहीं सकते उसका, ये क्यों हो रहा है. साइंस एंड साइंटिफिक स्टडीज हैव शोन, हैव प्रूवन दैट व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, एंड इफ वी डू नॉट टेक केयर राइट एट दिस टाइम, देन आई एम श्योर दैट 10 to 20 years down the line your kids are going to ask you कि आपने तब इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं रखा. So we as a parent, we have to take care, we have to understand that this is high time that we need to do something about it. And we can. It's not that we cannot. Environment है, ठीक है, pollution है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते. बहुत सारी चीज़ों को हम कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम बहुत कुछ कर सकते हैं. Number one is food. You know, food is the basic, you know, I would say the fuel of life. And the usage of processed and ultra-processed food which is happening should be taken care. You cannot take it lightly, parents. You cannot like, ये नहीं कर सकते हो आप कि चलो बिस्किट खा ले, कि चलो नमकीन खा ले, कि मैगी खा ले. नो. कि चलो जोमेटो स्विगी कर लिया, मंगा लिया. नो. दिस इज हाई टाइम. द यंगर द चाइल्ड, द मोर स्कैरी इट इज, बिकॉज नाउ द स्टडीज प्रूव दैट intake of all these foods is hampering children's health. You know, they are the cause of all these metabolic, immunological, allergic diseases which are popping up nowadays in children. You know, I think you might have experienced, a lot of you must have experienced कि बेबी पैदा हुआ है, 1 साल का भी नहीं है, उसको स्किन रैशेज हो रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, एक्जिमा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. एंड दीज ऑल आर रीजन्स, these are proven scientific reasons that we need to take care of what we are eating as a mother when the baby is inside us.
And then what are we making our babies eat? Like breastfeeding is one. Do never take it lightly. Never take it lightly. Then the way you wean, natural food. Food is the source, and if we do not take care, if we take it casually, chal aaj kha le. That's what happens. Aaj kha le, fir kal nahi dungi. Do not do that. Every single day, what a child eats, every single meal counts. So food as a mother, I think, is your responsibility. And even if we are working, what are you working for? If we leave money for our children, if we leave a lot of legacy with our children, and if they have health issues, what is the point? Right? What is the point? So we have to, as a mother, our primary focus should be in that what our child eats is certainly your responsibility. You cannot show away from that. So always take care. Whatever goes in your baby's mouth is your responsibility. That is one. Second is screen usage. Don't take it lightly again. A lot of behavioral issues, even eating habits, obesity, diabetes, all these are, secondary, they are indirectly related to screen times. First 2 years, the screen time is zero. It's zero, non-negotiable zero. And after that also, it's like half an hour, 1 hour. And it is not just that कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया वो खाना एक तो this is one very negative thing कि खाना खिलाने के लिए आप स्क्रीन दिखा रहे हो. Do not do that. मत खिलाओ खाना. बच्चे को भूख लगी वो खा लेगा. But this is another bad habit you are developing in the intake of food and otherwise also. So it gives sedentary life habits हो जाती हैं बच्चों की. Their brain function hampers, their way of thinking hampers, their cognitive functions hamper. It is an endless list. So again, I'm telling you, मैं दिल से बोल रही हूँ कि I know parenting is challenging. It is difficult. No doubt, it is much more difficult than it used to be. But once we have decided to be a parent, we cannot, हम फिर मुंह नहीं मोड़ सकते. तो हमें as a parent इसकी responsibility लेनी है that what our kids are doing, we have to take care. It's high time. Usage of plastics, again. We say कि इतने hormonal imbalances क्यों हो रहे हैं, बच्चों का hypothyroidism क्यों हो रहा है, why the girls are having such early menarche. Microplastics hamper the hormones. These are all proven in studies that yes, you have to take care. Usage of plastic tiffins, plastic bottles, you see and you name it, everything is in the plastic. You start seeing in your house. मैं ये नहीं कहती आप environment का सोचो, अपने घर का सोचो कि जो भी चीज़ आप देखोगे वो प्लास्टिक में है. I had this misconception कि okay, I'm not cooking in plastic, but if I'm keeping a dal in plastic box, that's okay. That's also not okay. Any and everything you apply on skin, you eat, you keep in plastic is ultimately making your body have microplastics. Every human being has microplastics in their body now, and it is giving rise to infertility also in couples, and so many hormonal issues in children. So this is again high time that we realize that it's our responsibility that our houses should be plastic free. So there are so many issues like this. It's a long list. I wouldn't cover all of them. But yes, I think these 3-4 things are very primary that you have to take care of in your children, And mothers can ask me questions now. Yeah, please. Good morning, ma'am. I'm Shobna, and I'm mother of Heer. She's in LKG. So, at the age of 3, she was diagnosed with iron deficiency, and she was anemic as well. I breastfed her for 2.5 years, and then slowly, gradually, once she turned 6 months, so we shifted her to semi-solid food as well. She was doing quite good. But then when this got diagnosed, so we were quite taken aback. Now, thankfully, with the help of doctors, the oral medications and the diet, it has been reversed. So the doctor now have told us to bring her weight to 16 kgs. She'll be turning 5 on 6th of July. So we are still struggling. We are still at 14.2. Sometimes it's 14. Sometimes it increases by 50, decreases. So what exactly I can add in her diet to at least reach to whatever the doctors are asking us to? Yeah, a very valid question, and again a very burning issue in India that Indian diet is very primarily iron deficit, So when in pregnancy your hemoglobin is low, the iron stores of mothers will be low, So the baby's iron stores will automatically be low. So that is from the baseline you start that the child does not have a backup of good iron. But so you need to
Yeah, I'll address all Yeah. issues, then we'll come up with your Yeah. question if left again. Then breastfeeding, that's a wonderful thing. Probably it might have, made her come out of a lot of things which are not good. Weaning again. And then you have to ensure that the diet is iron rich. And routinely in first 1 to 2 years, there is always a supplementation of iron which is given by the pediatrician, which we have to take care. Again, how you cook food. If you are a vegetarian, start cooking food in iron kadai, That enriches iron a lot. Use jaggery. Jaggery is made in iron kadai, that's why it's iron rich. So you have to be very conscious eater of what you're eating, how you're eating. I'm also vegetarian, so we have to take care that how we make our food iron rich like that. So these things have to be taken care. As far as the weight part is concerned, I'm not a very big fan of reaching a particular weight because there are a lot of factors in that. How's the child's BMI? What was your profile when you were young? As a parent, if you were a lean built child, your child will be lean built. So what you have to take care is the child eating well? Is the child active? Is the child eating well? If the child is having all these three things done, you are happy. You don't have to chase the weight then. She ticks all the markers that you said. She is super active. So be very happy, Eats pat your well. back, be proud, you're doing a good job. You don't have to target the weight. The only issue is like we are from army background and Mhm. the military doctors, they are not very particular about scales. Yeah. But this was the first time he said that you can now focus on at least to bring her to 15 if not 16. Don't So chase that was weight. something. Don't chase weight. If you have taken care of these three things, don't chase weight. Alright. You look lean built, that's a compliment, so your child will be lean built. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Hello, ma'am. First of all, I would like to thank you for such a wonderful speech. And when you started, I saw that not only I got emotional, but the lady sitting next to me, and I think other also, they got very emotional because whatever you spoke, that was out of, it was like ये हमारे दिल से ये हमारे दिल में है. Exactly. Yeah. Coming to the query, I have a really query. I think most of the mothers की movie screen time का आपने बोला कि हमारा खाते वक्त स्क्रीन देखना है. तो ये मेरी ही शायद रीजन रहा होगा, मैंने इसे दिखाया, मैंने स्टार्टेड. बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि मुझे इस स्क्रीन मैं गलत कर रही हूँ. तो ही इमीडिएटली स्विच टू दैट पार्ट कि मैंने हटाया स्क्रीन उसने मुझे बिकॉज वी हैड समथिंग उसने छोड़ दिया. बट अभी भी मैं एक चीज़ देख रही हूँ, मैंने कंज्यूमिंग समथिंग उसके साथ कुछ होना चाहिए, इज राइटिंग समथिंग, इज ड्रॉइंग समथिंग. पहले के टाइम पर हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था. वी यूज्ड टू लुक एट माय कंज्यूमिंग. बट मेरा बच्चा क्या करता है, जब वो खा रहा है, इज टेकिंग फूड, देयर इज नो इश्यूज. बट वो कभी भी चाहिए उसे, इज प्लेइंग विद द टॉयज, इज ड्रॉइंग समथिंग, बट ही इज नॉट लुकिंग एट द फूड. दिस इज अ कॉमन थिंग और That's again a very beautiful and valid point. I'll tell you why. Because we have made food as a work. जिस तरीके से हम बच्चों को वीन करते हैं ना, हम वहीं से गड़बड़ करते हैं. एक तो हम बच्चों को वीन करते हैं लाइक अ टास्क कि हमने ये बना लिया, बहुत हेल्दी बनाया है, हमने इसमें सब डाल दिया और हम खिला के मानेंगे. राइट. दिस इज हाउ मदर्स वीन फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स टू 2 years. फिर वो बच्चों को पकड़ते हैं, ठूस देते हैं. So that is a negative association with food the child has. And child psychology is the last and the most difficult to treat. अगर उसको दिमाग में ये बैठा है कि ये टॉर्चरस चीज़ है, उसने खाने को एंजॉय नहीं. जब आप उसको खिला रहे थे, उसने एंजॉय ही नहीं किया कि खाना प्लेजर है. हमें तो भूख लगती है, तो गोलगप्पे देख के पानी आ जाता है मुंह में, है ना. बच्चे के क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उसको एक नेगेटिवली एसोसिएट कर दिया है, एक टास्क की तरह कर दिया. उसको ये नहीं पता कि खाना भूख क्या होती है और खाने का प्लेजर क्या होता है, कि स्वाद क्या होता है ना. तो ये सबसे मुश्किल है चीज़ को ठीक करना कि साइकोलॉजी को आप कैसे चेंज करोगे. एंड दैट यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव दैट फेथ दैट इट्स गोइंग टू बी फाइन. You talk to that child at that time, let that child enjoy, talk about food, make them cook with you, make them value that. Go to the shop and make them pick vegetables, tell them to chop, tell them to use the kadai. You go in the kitchen, tell them कि चलो कुछ भी बनाओ, तुम आज बनाओ, appreciate. So once they do that effort, they appreciate what you cook and they appreciate food as well. So there are a lot of things, but they all require efforts. Yes. First of all, thank you everyone for organizing this and having me. And now my son Hello. First of all, thank you everyone for organizing such a heartwarming event. Then now my
son is 4 years old, 4 plus, but he still has texture issues. Like he eat paratha, but if you want him to eat apple, he'll say first blend it, then I will eat. Otherwise, I already had this discussion with so many doctors, and all of them say that this will go away with age. But I'm still struggling. He's not coming to proper solid meal. So I'm so happy that all the burning issues are coming up. I just am loving to talk about all of them. Yeah. So see, these first 3 years of child's life is it's the building stone of everything. ऐसा नहीं होता कि बच्चा पैदा होकर सब they are born with everything, नहीं. उनकी immunity, उनकी mental development, उनका physical development सब कुछ बहुत speed से in first 3 years होता है. Right, so that is the time which is the most critical window in child's development. उसमें हमारी कमी ये रह जाती है कि we are talking about texture. हम बच्चों को खेलने के लिए क्या देते हैं? प्लास्टिक टॉयज़, है ना. वो पूरे के पूरे डिफाइंड होते हैं, उनके पास पूरी शार्प एजेस होती हैं. हमने बच्चों को मिट्टी से नहीं खेलने दिया, उनको हाथ गंदे नहीं करने दिए, हमने उनको डो नहीं दिया, है ना. हमने उनको नेचर से एक्सपोज ही नहीं किया, हमने उनको ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग्स एक्सपोज नहीं किया. पहले बच्चा 10 लोगों में पलता था. That's how they used to learn. अब बच्चा सिर्फ एक मम्मा एक पापा, राइट, या एक मेड. तो वो सारा जो टेक्सचर का फीलिंग है, वो सब चीज़ें हैं. एंड योर अबाउट दैट मिक्सी चर्न थिंग. सो मिक्सी चर्निंग वॉज नेवर एडवाइजेबल. इट वॉज नेवर अ कंसेप्ट इन आवर टाइम्स व्हेन वी वर चिल्ड्रन. यू हैव टू गिव टेक्सचर फूड. अब तो सेरेलैक भी टेक्सचर ऐड कर दिया है वीनिंग फूड में, है ना. तो टेक्सचर इज इम्पॉर्टेंट. 6 महीने में आपको मिक्सी ब्लेंड करके खाना कभी नहीं देना है. आपको उसको मैनुअली आप चम्मच से मैश करो, फॉक से मैश करो, उसके मुंह में कुछ जाएगा, वो हाथ से छुएगा तो उसको टेक्सचर समझ में आएगा ना. अभी उसको क्या समझ में आता है? मुंह में डालना है, निकल जाना है, मुंह में डालना है, निकल जाना है. सो दैट इज़ द मिक्सी ब्लेंड कल्चर विच वी हैव फॉलोड सिंस 6 months ऑनवर्ड्स, है ना. तो उसको स्वाद नहीं पता, उसको मालूम है घोला है, मम्मी ने चम्मच से डाला है और निकल जाना है. तो आप उसको टाइम दो, बहुत धीरे जाएगा. सो दिस इज अगेन अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, है ना. तो वो बच्चों के लिए एक टास्क होता है. जैसे कोई चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, उनके लिए खाना एक काम है ना. उसको एंजॉय नहीं कर रहे, उनको ख़त्म करना है. तो दे वुड रादर प्ले देन ईट, है ना. एंड एज मदर्स हमारा क्या काम है? उनको खाना खिलाना. जब तक उनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे वो खाते रहेंगे. तो वो क्या करते हैं? वो खाते ही नहीं है. उनको मालूम है 1 घंटा लगाऊंगा मैं खाने, और मम्मी मेरे साथ पीछे पीछे घूमती रहेंगी, तो उनको वो टहलाते हैं, यू नो. दैट्स द रीज़न दे डू इट. सो यू नीड टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू लेट गो किड्स. दैट इज़ वन थिंग वी ऑल नीड टू लर्न एज पेरेंट्स, कि हमें पीछे नहीं पड़ना है. भूख लगेगी, खा ही लेंगे. हम रह पाते हैं भूखे? हम नहीं रह पाते. मैं तो नहीं रह सकती अभी भी, राइट. एंड ऑल ऑफ अस कैन नॉट. तो बच्चे भी नहीं रहते हैं. पर हम लोगों में उतना पेशेंस नहीं है कि हम वेट करें कि उसको एक्चुअली भूख लगे और फिर उसको इतनी भूख लगे कि वो कुछ भी खा ले, राइट. सो दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. उनको ठूसना नहीं है. अब आप मतलब आई एम टेलिंग, मतलब दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल गिव मी द फीडबैक कि एज मदर्स वी विल कीप 2-3 पराठास इन द चाइल्ड्स टिफिन एंड एक्सपेक्ट दैट कि वो टिफिन घर में, वो स्कूल में खा के आ जाए. ऐसा नहीं होता. हमें ऐसा नहीं करना है ना. ये टास्क नहीं है जो हमें पूरा करना है, राइट. हैव अंडरस्टैंड दैट योर चाइल्ड्स वेट will have a defined amount of caloric intake the child can have, and they are not camels कि स्कूल में खा लियो दिन भर फ्री. ऐसा नहीं होता है. उनको एक सब्सटैंशियल टाइम ऑफ अमाउंट में सब्सटैंशियल फूड चाहिए होता है. उनको भूख लगने देना है ना. तो हमें वेट करना है कि वो भूख लगे और खा लें. तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है. मतलब what my kids have taught me actually is the patience. अगर मैंने अपने बच्चों से कुछ सीखा है तो पेशेंस ही सीखा है. You know, that's I think every parent learns. So the more patient you are in dealing with kids, you know, the less fool they'll make of you, and the less advantage they'll take of you. Always understand your kids are smarter. They are watching you. You are under the radar. They are reading you. They are understanding your behavior. आपकी एक आईब्रो तनेगी ना, उनको समझ में आ जाएगा कि मम्मा गुस्सा है. फिर वो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे. और आप कहीं से किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, बहुत खुश हो, वो आपके पास तुरंत आ जाएगी, मम्मा हम ये ले लें क्या? उनको पता है मम्मा खुश है, चल ठीक है ले ले. You know, so that's how observant they are. You have to be smarter than them to deal with them. So you are on the radar. You got to understand that and behave that way. Yeah, it is. You got to resolve it. It does. So
So do we have more questions? No, it's a lovely interactive session. I'm loving all the questions you're putting up because that's, I think, the challenge of all the parents nowadays. So, thank you so much, and thank you, ma'am, for bringing me here. It's always a pleasure to address parents, and it's always a pleasure to motivate you to do good things because मतलब मुझे तो लगता है मैं सारे जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं उन सबकी मम्मा भी हूँ, तो मुझे दिल से लगता है कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द राइट वे. सो थैंक यू सो मच.